gracing this occasion. His Holiness, I think Gopal Krishna Maharaj aa rahe hain. Braj Hari Prabhuji, Braj Vilas Prabhuji, Gaurang Prabhu, our very dear Shri Ashish Chauhan ji from the Bombay Stock Exchange, Shri K.K. Maheshwari ji from Birla, thank you very much. थोड़ी सी इंट्रोडक्शन डिफरेंट करेंगे आज, क्योंकि प्रोग्राम जो है एक मिलाप है ऑफ 2 स्टेट्स, महाराष्ट्र का जहाँ गोवर्धन इको विलेज है, जहाँ इस्कॉन है, जहाँ हरिबोल है, और उत्तराखंड का. तो संकेत स्टार्ट. हरिबोल की जो जर्नी थी वो लगभग 4-4.5 साल पहले. अच्छा, महाराज आ गए. तो अब महाराज आगे तो शुरू करते हैं. हाँ जी. सो हरिबोल की जर्नी जो है 4 साल पहले शुरू हुई थी, एक छोटे से इनिशिएटिव से मंदिर के, जिसमें हम ये चाह रहे थे कि शुद्ध दूध जो कि रूरल एम्पावरमेंट के प्रोजेक्ट में कैसे हम जो है बॉम्बे में ला सकें. सो हमने सोचा हाउ टू ब्रिंग ट्रेडिशन एंड टेक्नोलॉजी टुगेदर. हमारा जो फोकस था, इट वाज ऑन क्रिएटिंग माइक्रो इकोनॉमीज, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, एंड देन फाइनली कलेक्टिंग द ग्लोबल मार्केट. माइक्रो इकोनॉमीज में पालघर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि गोवर्धन इको विलेज ने काफ़ी काम किया है, इस्कॉन के तलासरी गांव फार्म ने काफ़ी काम किया है. हमने ये देखा कि इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाया जाए. उसको करने के लिए हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव किया इन विलेज इन गुजरात, पालियाड़, बोटाड डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे हमने सारे गैया जितनी भी थी फॉर अ सर्टेन पॉपुलेशन जो अहिंसा करना चाह रहे थे, उनको हमने अडॉप्ट किया. वहाँ के हमारे सरपंच जी और वो आए हैं, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया 2-3 साल के लिए. उसके बाद as we started moving and exploring things, नथानी जी जो कि महामहिम के स्पेशल सेक्रेटरी, उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन करके कहा कि यार गवर्नर साहब पूछ रहे हैं कि आप लोग आज तुम फ्री हो. मैंने कहा बोलिए. तो कह रहे हम उत्तराखंड जा रहे हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव ऑफ GI टैगिंग के लिए, तो उसके लिए तुम भी चलो देखो क्या है क्या. तो हमने कहा एब्सोल्युटली व्हाई नॉट. तो मैं उत्तराखंड गया एंड जाते ही देखा कि हाउ मच ऑफ ऑर्गेनिक एम्पावरमेंट, हाउ मच ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ इज द पोटेंशियल ऑफ द स्टेट. और उधर से एक छोटा सा हमने जो जर्नी स्टार्ट किया, हाउ टू कनेक्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. नेक्स्ट. सो द एंटायर मूवमेंट ऑफ हरिबोल, जो कि इंस्पायर्ड बाय प्रभुपाद, इंस्पायर्ड बाय लॉर्ड कृष्णा, इज ऑल अबाउट अहिंसा, हाउ टू ब्रिंग इन द अहिंसा मूवमेंट. नेक्स्ट. सो जैसे मैंने आपको बताया, डेयरी से हमने स्टार्ट किया एक छोटा सा इनिशिएटिव वेयर कंपैशन टू टेक कटिंग एज टेक्नोलॉजी को टुगेदर टू बैलेंस बोथ. सो बेसिकली अगर आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिसेस में हम लोगों ने सात्विक प्रैक्टिसेस लाए, गैया की सेवा कैसे कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं. फाइनली जब टेक्नोलॉजी की बात हुई तो हमें लगा द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड इज अवेलेबल इन इजराइल. So thanks to our friends from the Ministry of Tourism and Government of Israel, where we are represented by Sami
and Judah and his lovely wife. We went to Israel a few months back to understand what technologies can be incorporated not only for dairy but also organic. So if you can see, we've done some smart collars for the cows to make sure in geotagging that actually the cows are saved. Second next. ये एक pledge है जो farmers ने लिया है to protect 3,000 cows in a sustainable manner. Second next. Government की हमें appreciation भी मिल चुकी है. गुजरात गवर्नमेंट ने हमें एक सर्टिफिकेट दिया था हरी बोल का लार्जेस्ट इंटरवेंशन फॉर देसी गाय टू ब्रिंग इन प्योर A2 टेस्टिंग. We don't compromise on standards at all. And as you see, the cows are well tagged and well looked after. Second next. जो next journey शुरू हुई, all about women empowerment and all about creating a bridge between the hills, the holy hills of Himalayas and the plains. The idea was to create a direct farm to plate concept, circular economy. So first thing we did was when I was in Dehradun, we connected with a foundation which has about 25,000 women and who are collecting and doing a lot of foraging of honey. And we made sure that we infuse it with Badri Tulsi, the holy Tulsi, and create a fantastic product. Again, go ahead. और आप देख सकते हैं, this is the rural empowered women of Uttarakhand. Again, go ahead. Second, जो after that मेरी मुलाकात हुई अपना उपेंद्र जी, आप तो उपेंद्र जी अच्छा महाराज आ गए. I met a very noble person who otherwise heads Bajaj Power in the country, and he had started a small initiative of helping farmers. So his brother-in-law अपना अतुल और मैं मिले, हम गए रानीखेत गए और बहुत बढ़िया लगा. उसमें हमने देखा there is so much of potential to not only look at honey but also look at organic spices, look at organic products. मैं पहली बार water milled आटा देखने गया कि होता क्या है. Second, go ahead. ये तो अपना ही ये है अपना very other famous farmer of Uttarakhand, Gopal Upreti ji. He's here. He will show a short presentation. He has broken the Guinness World of Record for a lot of farming practices. ये watermelon है, stone grinding. Go ahead. Organic certification, this is beyond organics. We are trying to bring the concept beyond organics to the entire nation and abroad as well. Sanket, go ahead. So, we thought women entrepreneurship तो हो गई, but entrepreneurship in cities कैसे लेके आए? How to uplift lower middle income women, single mothers, people who don't have the opportunity. So we are designing a concept with, I can't name it's a very large foundation of India, of creating 2,500 micro entrepreneurs and launching something called as Khichdi Express. Every city, metro city will have a Khichdi Express where women from Uttarakhand, women from the upper hills will be able to send their products directly to this Khichdi Express. So we are cutting all the middlemen in between and the entire benefits will be shared between both. And we will facilitate this entire movement. So as you see, there is a very well designed program. So rural impact of 10,000 tribal farmers, but it's rural farmers, we won't say tribal, and connecting 1,000 plus Gujarat farmers and 200 plus rural farmers in Maharashtra to metro cities and beyond. The idea is to use templenomics, where the strength of ours, of ISKCON and other temples put together, without having any middleman, can make sure that we create a very solid circular economy going ahead. Okay, go ahead. So this is a Sattvic revolution which we are talking about. आप देख सकते हैं, we have almost about 782 temples around the world, and we are trying if we can get only in this particular area products from across, that itself will become a very big economics. Thank you very much. Now I will request our dear Brajvilas Prabhu, who is the president of the world's largest temple, which is coming up in Mayapur, to give a few. We will first play the video, then I will speak a few words. Is the video ready or I can speak? Ready?
Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namini Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Pashtrata Deshatarine Ajanulambitau Bhujau Kanakavadato Sankirtanaka Pitaro Kamalaya Dakshu Vishwambaro Japaro Yugadharma Paulo Vande Jagat Priyakaro Karunavataro 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 Hare Krishna. First of all, very happy and excited to have Honorable Governor Mr. Koshyari ji here today with us, and also we have Ashish Chauhan ji, Maheshwari ji, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, His Grace Brajahari Prabhu, and we have His Grace Gauranga Prabhu here with us today. First of all, my Hare Krishna and pranams to all of them. I was asked to speak about global impact on sustainable development. Our founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada, he had given us a formula to have global impact. That formula is very simple. And that formula is simple living and high thinking. Simple living and high thinking. What does it mean, simple living? Simple living means Atmanirbhar Bharat. This is what he was referring. That is simple living. Atmanirbhar Bharat. We develop our own food grains. We develop our own products. And what is that high thinking? And that high thinking is thinking in the line of the scriptures. Bhagavad Gita, Srimad, Bhagavatam, Upanishads, and Vedic texts. High thinking. So that you can know God, you can serve God, and you can love God. This is what he was taught us. Simple living and high thinking. And today, a simple living, which the Haribol product which is coming, is an example of that simple living. Example of that simple living. Which has been created to create an impact with Sabka Saath, Sabka Vishwas, Sabka Prayas और सबका विकास के लिए ये हरिबोल प्रोडक्ट जो है ये आत्मनिर्भर भारत एस्टैब्लिश करेगा. It will create an impact. That is this Haribol product, which is we are discussing how this product can have a global impact. From Hare Krishna to Haribol, the show just has begun. So we are very grateful for the Haribol team who are here, who have made this arrangement to facilitate so that this can be a revolution. This Desi product can be a revolution in people's lives and consciousness. So we thank the team here, headed by Keshav Prabhu and HD Prabhu and all of them, the Haribol team who are here. And Gar Gar Mein Bol, Haribol. Gali Gali Mein Shor, Haribol. Ye Dil Maange More, Haribol, 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 Haribol. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji, for that lovely inspirational thing in the beautiful video. Now I'd like to introduce and request the person who's been driving India's economy for almost decades and is basically also responsible for the world's first fastest stock exchange in taking it from manual to digital, Shri Ashish Chauhan, Chairman, Managing Director of Bombay Stock Exchange. Thank you. Thank you.
Respected His Excellency Shri Bhagat Singh Ji Koshari, Governor Maharashtra, Gopal Hari Maharaj Prabhu, Braj Hari Prabhu, Gauranga Prabhu, Maheshwari Ji, Braj Vilas Prabhu, and everyone present here today. It's an honor to be here. Hare Krishna to all the devotees. In some ways, last few years have taught us how to be closer to ourselves, how to value the life. The world has become so fast over several decades that we had forgotten that there is something called life, and we need to live it. We don't have to run around it, run away from it. And I think last 2 years have taught us that keep everyone close, whoever is with you. And how do we bring India into the world leadership going forward? And that's where so many new initiatives have happened in India over the last 7-8 years. One of the larger initiatives that happened during the COVID period, which many of us have not appreciated, not noticed, is that when the first 70 days of lockdown was announced, it was very difficult for poor brethren in India to actually earn and then eat. A large portion of India today, almost 80 crore people are living close to the poverty line. And that's where many of us wrote to the government of India saying you need to do something for providing food to them. And fortunately, government actually ran railways full of food grains over last 2 years, more than 2 years now. The government of India has been providing 80 crore people with free ration. This is the largest initiative of its kind in the world. In 2020, UN World Food Program got Nobel Peace Prize for providing partial food to around 8 to 9 crore people. And for last 2 years, India has been providing 80 crore people with free ration as well as some money also using Jan Dhan Aadhar mobile account. So in some ways, we may look poor as a country by way of GDP per capita. We have around $2,000 per capita GDP. At the same time, today we have been able to feed freely a population which is larger than Europe, or a population which is larger than America, Canada and Mexico put together, or the entire Latin American continent. In fact, last 2 years we have fed more population free than all the other continents except Asia and Africa. And that, I think, tells you about what Indian ethos are, how we as a society take it lightly. All these achievements, any other country, any other government would have done, it would have been sort of talking about it across the world, spending more money on marketing than actually doing things. Whereas here, and this is a government initiative, we blame our politicians, we blame our bureaucrats, and probably they deserve some part of blame. Mr. Modi and his government, as well as all state governments, central, all the municipalities, everyone need to be appreciated, and probably Mr. Modi requires to be considered for Nobel Peace Prize. If they can give Nobel Peace Prize to World Food Program, UN World Food Program, for helping 8 crore people partially with food. 80 crore is a larger number, right? Unless 80 crore in India is different, 8 crore somewhere else is larger. So basically those are the things we need to all be aware, and I thought I'll take this opportunity to make you aware that these are the achievements. Of course, there are other achievements of direct benefit transfers and all. And somewhere the civil society have played their own part, and the ISKCON Foundation has been at the forefront. It is one of the largest networks in the world. They have also worked tremendously hard during COVID period, setting up temporary hospitals, running their own hospitals. We are all Mumbai people, we know Bhakti Vedanta Hospital at Mira Road, and
literally the volunteers from the ISKCON Foundation across the world have done wonderful work, taking care of people who wouldn't otherwise be touched. That's why we also need to give thundering applause to ISKCON Foundation for their work during this period. And of course, recently, I mean, all these things look very distant, right? 2 years have passed by and we have forgotten about it. But India together has worked wonders. We prepared our own vaccines. We gave 100 crore plus vaccines to at least once to 100 crore people, and 85 crore people have got a double vaccine. We also sent more than 20 crore vaccines to the rest of the world. In some ways, I say that either we are not as poor as we think we are, or West is not as rich as we think they are. So somewhere, although we may be $2,000 per capita income, in terms of the number of infections, number of deaths, India is in the bottom half of 224 territories which are being monitored. We are close to 120 out of 224 territories being monitored. US, which has 33 times more capita per capita income, is in top 20 in terms of number of infections, number of deaths per million. And that tells you that as a society we are more disciplined, we are more caring, and I think we should continue. In that context itself, I must say, Honorable Bhagat Singh Ji Koshyari, he stays in Maharashtra, he thinks about Maharashtra every day. Today, we are on the Maharashtra Day, May 1 is also Labor Day, but it's also Maharashtra Day. In 1960, Maharashtra was created out of a larger state which was there, and then that's where today we are on this particular day, meeting here in the evening. It's a very auspicious day, and at the same time, Bhagat Singh Ji comes from Uttarakhand, Devbhoomi as we call it. Literally, almost all our religious places, the most important religious places are in Uttarakhand. He continues to think how to connect Uttarakhand's people with the mainstream of India. And that's where I think today's initiative of connecting Haribol and with Uttarakhand and also Mumbai as well as the rest of the world is very, very laudable. I think Yashni Prabhu, Keshav Prabhu, they are live wires. They require that encouragement, that they are doing a great job under the guidance of Gauranga Prabhu and all other leaders in the ISKCON team. One thing more which I forgot is that in Ukraine, when the war happened, the first port of call for every Indian student was the ISKCON Foundation, and I think we need to give a big hand to all the volunteers who took care of our students from across the country, sitting in Ukraine without worrying about their own lives. And those are the kind of things which Indian culture has taught us. Indian culture has taught us to not only take care of our own, but also other people, and that's where Haribol is a great initiative. I am one of the what I call a beta customer, a guinea pig, so to say, of all the Haribol products. That as and when any product is developed, one of the first set of products come to me, and I think it is a wonderful initiative. It's going to become one of the larger brands, mark my words, going forward. The amount of enthusiasm and quality and care that this team is showing, and some of the innovations, including the milk, the flavored milk, and other things are phenomenal. At the same time, we need to worry about our poor women working in Uttarakhand. How do we connect them to the mainstream, not only in India, but across the world? And that's what should be our aim going forward. So I request also Keshav Prabhu, Yatn Prabhu to work on this even more and ensure that automation which is allowed now, or which is enabling all of us to connect to us in a faster way, e-commerce and other things that can be initiated into this, so that those ladies producing organic goods are able to sell their wares to all of us. Also, people staying abroad who want to actually buy these things, and that's what we need to kind of work on automating and doing other things.
But overall, I think this is a great initiative, and I am really grateful to the ISKCON Foundation and the organizers for calling me today, and all of you for coming here and listening to me. Hare Bol, Hare Krishna. Thank you very much for the encouraging words, Ashish ji. अब वक्त है to bring our own dear world record holder, Guinness World of Record holder in agricultural practices, sustainable agricultural practices and mixed cropping technology Uttarakhand, Shri Gopal Upreti ji. इन्होंने he has gone to every country, farm producing country, to make sure that he can bring the best technologies to India. Thank you for coming. महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित, सबको मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। जैसे कि आपको पता है, मैं उत्तराखंड से आता हूं, जहां से हमारे आपके राज्यपाल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भी आते हैं। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज ISKCON ने मेरे को यहाँ पर बुलाया और मुझे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग के ऊपर बोलने का मौका दिया। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बताना चाहता हूँ। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जैसे हम पहले जमाने में खेती करते थे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम दूसरे रूप में कहें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये दोनों ही एक सिक्के के दो एक ही तरह की चीजें हैं। जिस तरह से आप भी बताया कि हरिबोल का जो उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाना है, उसी तरह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी यही है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत हम कैसे अपनी जैव विविधता को बनाए रखें, कैसे अपनी सॉइल हेल्थ को हम जो है मजबूत कर सकें, और कैसे हम अपने ही जो चीजें हमारे यहाँ हो रही हैं, चाहे वो खाद के रूप में हो, पोषक तत्व के रूप में हो, उनको कैसे हम अपने फार्म में यूज करते हैं, ये सब चीजें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत आती हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के जब हम बात करते हैं, इसके कई लक्ष्य हैं। उन लक्ष्यों की जैसे हमारा सामाजिक लक्ष्य है, आर्थिक लक्ष्य है, और हमारा पर्यावरण का लक्ष्य भी है। आर्थिक लक्ष्य के तहत कि कैसे हम खेती को, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को कैसे मुनाफे की ओर ले जाएं, तभी हमारे नौजवान कृषि की तरफ जुड़ेंगे, कृषि की ओर उनका आकर्षण बढ़ेगा। दूसरा जो सामाजिक पक्ष है कि हम लोग ऐसा प्रोड्यूस पैदा करें जिससे खाने वालों की, हमारी जनता की सेहत ठीक हो, हमारे अंदर बीमारियां ना आए, हमारे समाज के जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उससे जो असाध्य रोग उत्पन्न हो रहे हैं वो ना हो, और जो पर्यावरण का है कि किस तरह से हमारा पर्यावरण दूषित ना हो, और ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट्स हैं उसके प्रभाव खेती पे जो है वो कैसे कम किया जाए, वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कुछ हद तक हम पेस्टिसाइड्स जो बहुत कम हानिकारक है उनका भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इसी के अगर हम एडवांस में कहें तो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग आती है, जिसमें हमारा टोटल फोकस अपनी सॉइल को मजबूत बनाना है, उसकी सॉइल की हेल्थ को मजबूत बनाना है। उसमें किसी तरह के केमिकल, फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स सारे बैन हैं। हम प्लांट को क्या दे रहे हैं वो मैटर नहीं करता। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हमने अपनी सॉइल को मजबूत करना है। अगर हमारी सॉइल की हेल्थ मजबूत होगी तो हमारा प्रोड्यूस अपने आप में बहुत अच्छा होगा। उसमें सारी ज्यादातर जो बीमारियां हैं वो सॉइल से ही ज्यादा ऊपर को आती हैं। सॉइल को मजबूत करना, हेल्दी करना ही ऑर्गेनिक फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य है। आप देख रहे होंगे कि इस देश के अंदर जब हरित क्रांति नहीं आई थी तो उससे जब देश आजाद हुआ, जनसंख्या का जो जिस तरह से हमारे देश के अंदर जनसंख्या बढ़ी और देश में अनाज की कमी हुई, तो उस तरह उस वक्त देखा भाई ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत हमारे फर्टिलाइजर्स का प्रयोग हम लोगों ने करना शुरू कर दिया। मानते हैं कि उसके बाद हमारा उत्पादन भी बढ़ा, लेकिन उसका और ये भी आया कि किसानों की उसमें लागत कम हो रही है, लेकिन उसका नतीजा ये आया कि अगर हम 20 वर्ष पहले की बात करें, एक हेक्टेयर में अगर हमारा 300 किलोग्राम यूरिया की खपत होती थी, आज वो 600 से 800 किलोग्राम पे आ गई है। और उसी तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करें, अगर 20 साल पहले भी अगर 10 टन एक एकड़ में अगर हम गोबर के खाद या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज भी वही रेशो है। तो कहने का मतलब है केमिकल फार्मिंग में जो भी हम फर्टिलाइजर या उसका प्रयोग कर रहे हैं उनकी तादाद, सॉइल की फर्टिलिटी इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है कि उसकी जो क्वांटिटी है वो डबल ट्रिपल होते जा रही है। और हमारा ऐसा मानना है कि सॉइल हेल्थ
रासायनिक जो हम खादों का प्रयोग कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो प्रयोग कर रहे हैं, वो इतनी कमजोर हो जाएगी कि इन खादों की क्वांटिटी और बढ़ती चली जाएगी। उसका कारण क्या होगा कि किसान के ऊपर जो उसके खर्चे थे, खाद, बीज, पानी, ये बढ़ते डबल ट्रिपल होते जाएंगे। तो आने वाले समय में ये भी एक चिंता का विषय है कि जिस केमिकल फार्मिंग को हम बहुत आसान समझते हैं, अब वो बहुत महंगी होती चली जाएगी, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, सॉइल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तो हमारी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसके तहत हम लोग वहीं पर जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जैसा बड़ा आत्मनिर्भर, फिर से आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम चला है, मैं समझता हूँ देश की कृषि की दशा को बदल सकता है। इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत जो लोग पहले बोलते थे कि ऑर्गेनिक, बहुत सारे साइंटिस्ट जो बोलते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग यील्ड बहुत कम होती है, इसलिए हम केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आपको ज्यादा मैन्योर की जरूरत होती है। जैसे मैंने बोला कि 1 एकड़ में 300 ग्राम एनपीके यूरिया से उसकी पूर्ति हो जाती है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में 10 टन आपको कंपोस्ट चाहिए। तो वो 10 टन कंपोस्ट कहां से आएगा? इतने हमारे पास पशुधन भी नहीं है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए अब दोबारा से पशुधन को भी आगे हमें बढ़ाना होगा। और दूसरा, जो पशुधन के साथ साथ हम किसानों को ये बता रहे हैं कि भाई कैसे आप इस 10 टन जो कंपोस्ट की जो पूर्ति है, वो कैसे आप अपने यही अपने फार्म में आपके जो हो रही है, वीड्स हैं, हम खरपतवार जिनको काट देते हैं, तो हमारा ये कहना है उसी खरपतवार को आप अपनी जमीन में उसको मिक्स कर दो सॉइल के तहत। उसी तरह से घास होती है, कई ऐसी चीजें हमारे यहाँ देखेंगे, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेसिकली आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, जैसे आपको जंगल भी चाहिए, जानवर भी चाहिए, चिड़िया भी चाहिए, गाय भैंस भी चाहिए। तो ये सब करने के लिए पहले समय में क्या होता था, हम पेड़ पौधे भी लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, तो उससे हमको खाद भी मिलती है, हरी खाद भी मिलती है, जिससे हमारे जो 10 टन की जो आपूर्ति है ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंपोस्ट की, वो पूर्ति होती है। तो उसी तरह से आप देखेंगे हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस करी हैं जो केमिकल फार्मिंग को यहाँ पे पीछे, ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसको पीछे पछाड़ दिया है। आपने यहाँ पर हमें ISKCON लोगों ने बुलाया, और हमारे यहाँ जितने भी जो किसान हैं उनके कल्याण के लिए हमारे दीर्घायु हिमालयन ऑर्गेनिक के चेयरमैन टीसी प्रेती जी हैं, जो किसानों को हमेशा अपनी तरफ से बहुत मदद करते हैं और आगे उनको बढ़ाने का काम भी करते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया, हरिबोल के माध्यम से हमारे किसानों को लाभ मिलेगा, हमको मार्केटिंग की सुविधा मिलेगी, और ये हमारा सौभाग्य है। और हम अपने महामहिम राज्यपाल जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड के किसानों को एक मार्केट देने का काम किया, क्योंकि उत्तराखंड मूल रूप से एक ऑर्गेनिक स्टेट भी है, हम नेचुरल ही ऑर्गेनिक हैं, और बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस को हम ला रहे हैं जिससे किसान के उत्पादन को बढ़ाया जा सके, और वहाँ पे खाद पानी की जो कमी है उसको कैसे हम अपने खाद में, अपने खेतों में जो चीजें पैदा हो रही है उन्हीं के माध्यम से वो उसको पूरा कर सके। तो हरिबोल का जो प्रोग्राम हुआ, इनका हरिबोल के माध्यम से हमें जो लाभ मिल रहा है, इसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ पर आपने हमें बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको शुद्ध जैविक प्रोडक्ट हम यहाँ पर देंगे, जिससे कि देश विदेश में हमारे जो प्रोडक्ट हैं, उत्तराखंड के प्रोडक्ट, लोग उनको जान सकें। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं सिंस बात हुई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, उसमें से एक छोटा और क्योंकि गोपाल जी यहाँ पे ही डज रिकॉर्ड फार्मिंग फॉर एप्पल्स with the help of our friends from Israel, we are actually getting a technology जहाँ पे organic apples, organic fruits, vegetables को organic spray एक आता है, it is developed, it's an IP product, जिससे 20 days you can transport the product from any place to any place, उसका खराब नहीं होगा वो, it will be naturally preserved. We are bringing, Haribol is trying to bring this technology in. Now I will, I think, request Mahamihim ji and all the honorable guests to basically do a small cutting of the organic products of Uttarakhand. I will request TCO Priti ji and Gopal ji, please come on stage. ये छोटा सा एक इनिशिएटिव है जो कि आप लोगों के उत्साह से शुरू हुआ है मार्केट लिंकेज के लिए। महाराज गोपाल कृष्ण महाराज हाला साउंड साड़ी हो
तो ये एक छोटा सा वो है, इसमें soon we will think live fresh fruits and vegetables कैसे हम पहाड़ों से यहाँ तक ला सकें। थैंक यू। ये सब सब है सेल के लिए गोपाल जी को बुलाया। तो ये प्रोडक्ट्स जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, दिस इज थैंक्स टू दीर्घायु, जिनके अभी आपको एक छोटा सा ही विल टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ रूरल इकोनॉमी उत्तराखंड, प्लीज टीसी प्रेम जी। अभी आई विल रिक्वेस्ट हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज टू जस्ट से फ्यू वर्ड्स and bless this occasion. ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले पुनरुपगतामः दानि स्वाहा पदतिः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम बड़ी खुशी की बात है कि हर एक प्रोडक्ट उत्तराखंड में बनेंगे और भारत के हर कोने में आपने पूछा हो गया। आपने सुना कि ISKCON संस्था बड़ा प्रोग्राम करती है सारे विश्व में। क्या कारण है? हमारे गुरु जी की इच्छा थी कि no one should go hungry within a distance of 7 kilometers। ISKCON के भक्तों के द्वारा प्रयास किया जाता है सारे विश्व में प्रसाद बांटा जाए। आपने अभी थोड़े समय पहले कुरुक्षेत्र रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में सुना। तो ये युद्ध जब शुरू हुआ, मैं भक्त पहुँच गए थे स्टार डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और आज भी 3 महीना हो गया इस युद्ध को। हमारे भक्त यूक्रेन में, रशिया के बॉर्डर में, पोलैंड के बॉर्डर में, हंगरी के बॉर्डर में प्रसाद बांट रहे हैं। ये सारे विश्व में बांटा जाता है। संस्था की स्थापना की और उन्होंने विदेशों में गौशाला खोले। ISKCON के स्थापना से पहले विदेशों में कोई गौशाला नहीं था, और बाबा जी ने पहला गौशाला खोला वृंदावन में। और उन्होंने ये दिखाया कि गाय माता की पूरी देखभाल कैसे होनी चाहिए। हमारी 7 माताएं हैं, उनमें एक है गाय माता। और प्रभा जी के प्रेरणा से अनेक गौशाला खोले सारे विश्व में। आज आपको जानकर खुशी होगी कि रशिया जैसे देश में भी ISKCON ने कोई 10 गौशाला खोले। और हम ये बता रहे हैं किस प्रकार गाय की सुरक्षा हो रही है। इंग्लैंड में वह प्रसिद्ध एक नेशन गौशाला खुला था कोई 15 साल पहले। उसका उद्देश्य ये था कि यूरोप को यह शिक्षा दी जाए किस प्रकार गाय माता की सुरक्षा की जाती है। तो गाय माता की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। आपकी ये है कि वो प्रोडक्ट के द्वारा मिल्क प्रोडक्ट को भी केवल आज विश्व की स्थिति भयंकर है। आप देखते हो कि दिन पे दिन पाप का बोझा बढ़ते जा रहा है। इसके कारण वहाँ के कष्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक फूड गिनती के
का विषय है। world is running out of food, natural ingredients, और running out. ये वो भविष्यवाणी है। इस 27 साल के बाद हमको खाने के लिए भोजन भी सारी चीज़ें नहीं मिलेगा। भारत में भी आप देखते हो पानी की बहुत कमी है। आज भारत के कई स्थानों में आप 300 फीट खोदो वहाँ भी आपको पानी नहीं मिलेगा। ये पानी की समस्या बढ़ती रहेगी। तो पृथ्वी पर जब पाप जो बढ़ता है प्रकृति द्वारा कष्ट भी बढ़ता है। इसलिए हमारे संदेश की बहुत आवश्यकता है। कृष्ण के द्वारा प्योर फार्मिंग की चर्चा भी की जाती है। आप चाह रहे थे कि ये फार्म है खेती है वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए। आज कृष्ण was not in favor of tractors against it. He said that these tractors are creating unemployment. So Bhagavad Gita खेती should be done in a natural way. जैसे अभी डॉक्टर अभी गोपाल जी बता रहे थे। So that's what we believe in. Organic farming and we use fools. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके तो उसका उन्नति का भी अच्छा होता है। ये जैसे आपने सुना ऑर्गेनिक फार्मिंग अमेरिका में in all these food chains you have two sections. One is regular food, one is organic food. The organic food is two times the price, or even 3 times. They have organic milk. So I asked them, what is organic milk? And they said, organic milk is where the cows are not fed anything but pure grass. And that grass was grown without any chemicals. So that is organic milk. मैंने कई बात अमेरिका में उन्होंने अहिंसा दूध और अहिंसा प्रोडक्ट खाना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बांट रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग यहाँ वो प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो। And your goal is also to provide employment to the ladies. We wish all success. And be happy to help in any area that they can. Hare more products. Should. I think everything is going to be offered. The Hare more products. Are you going to offer them? Yes. People are going to get prasad. Yeah. So we wish them well. We hope the products go all over the world. Hare Krishna. Hare more products. Thank you, Maharaj, for your blessings. Means a lot to everyone. Since Maharaj has spoken about organics, it is rightly appropriate to invite the person who has started the transformation of Uttarakhand rural economy through organic only. Yes, Honorable Governor, our very beloved Governor of Maharashtra, Sri Bhagat Singh Koshari ji, he is our source of inspiration, always positive and always there, that to encourage us. His Holiness Prabhu Gopal Krishna Goswami Maharaj ji, Chairman ISKCON India, His Grace Prabhu Gaurang Das ji, and he's the Director, Govardhan Eco Village and member Global Governing Body of ISKCON, and Sri Ashish Chauhan ji, Chairman and MD Bombay Stock Exchange and Chancellor Allahabad University, and our organic man from Uttarakhand, Sri Gopal ji, and Sri Keshav ji and Sri Yasnis ji, and above all Sri Vijvilas Das ji, and all the others sitting on the dais, and all respected guests of this August gathering.
Hare Krishna. On behalf of the people of Devbhoomi Uttarakhand, I greet all of you. Devbhoomi Uttarakhand is blessed with the Char Dham, Badrinath, the abode of Lord Vishnu, Kedarnath, the abode of Lord Shiva, Gangotri, where Ma Ganga descended on this earth, originated and descended into this earth, and Yamunotri, the origin of Ma Yamunotri. Devbhoomi is the country yard of Lord Shiva and Ma Nanda. It lies in the feet of Ma Nanda Devi, while Nanda Gumti, Nanda Khat, Nanda Kot, Trishul, Panchachuli, Bhagirathi, Shivang, Kedar Dome, Chokhamba stand witness. These great snow peaks slowly give way to the picturesque green hills marked by terrace fields as numerous streams and rivulets cascade down the narrow valley to form larger rivers that water the fertile plains of our country. Uttarakhand is the home of India's holiest rivers, the Gangas, Yamuna, Saryu, Pindar, Gomti, and Kosi, and many others. On one hand, and I will say proudly that our respected Koshari ji, that you know that it is in that land that Saryu, near the Udgam of Saryu is his village. On one hand, Uttarakhand has a very fertile Tarai region with huge fields, large farms, and farmers too have large land holdings. Basmati rice and other agriculture produced from these fields is renowned world over. On the other hand, the situation in hilly areas, however, is quite different from that of Tarai. The picturesque terrace fields of the hills are often small, and so is the land holding of most farmers, which decreases further with every generation. Earning a livelihood from these small land holdings and rugged terrain is a challenge that each farmer faces daily. It is our endeavor to convert this rugged terrain into fertile and capable of growing organic agricultural products, because as our friend Mr. Gopal told, that all these fields are naturally organic till we do not corrupt them. The water here that flows in the numerous streams that irrigate these fields is the much desired mineral water, and the air is super clean. Chemical fertilizer is relatively an unknown commodity to most inhabitants. Farming is largely natural and organic. Most houses have livestock that serve as the backbone of both their family and their farm field. Uttarakhand hill farmers mainly cultivate crops that are required for their daily needs, like lentils, millets like ragi or madwa, as it is locally called. Wheat, paddy, some grains, vegetables, local herbs, etc. Most small and marginal farmers are unable to meet the family's need and are always on the lookout for jobs in the cities or in the Indian Army. It is not just a mere coincidence that one of the smallest states of the country gives its two of the most decorated regiments, the Kumaon regiments and the Garhwal Rifles. The state has the distinction of giving our nation two army chiefs and first and so far the only CDS Chief of Defence Staff of India, which unfortunately passed away, as you all know, in a helicopter crash. He was the army chief first and then became the CDS. So every say, you know, that so many families, one or other is in the army from small rank to the higher ranks, because you know that there are no sources of other incomes and people prefer to go to the army. It has been our agenda from the very beginning to work on ways to increase the per nali income. We know that there the agricultural holding is in nalis. One nali is equivalent to 240 square yards, and the holding of the farmers is say 5 nalis, 10 nalis, 20 nalis. 1 acre is considered to be a very big holding. So they are not. There are very few farmers which will have the holdings of more than say 20 nalis.
So our endeavor is there to how to generate their income in the small holding. So something different will have to be done. That was the motivation and inspiration for us. So increase the pernally income of the farmers here, most of whom have not yet been exposed to the chemical fertilizers. So that was our motivation and inspiration, that we can do something here on the organic which can give them the good results. Though some have used pesticide as and when it becomes absolutely necessary. It is our firm belief that organically grown fruits like kiwi, dragon fruit, apples, and Malta, that is called the tangerine, vegetables like kale, broccoli, peas, etc., and spices and herbs like turmeric, ginger, jakia, brahmi, badradanti, chamomile. Chamomile is, that is growing very good in Uttarakhand now, very precious. Rosemary, basil, etc., can provide the necessary boost to the rural economy and help lay a solid foundation in Uttarakhand. We conduct at our level, we conduct workshops on various agricultural systems, needs, practices, and marketing needs with the help of experts from renowned institutions like ICAR, Pattargarh University, GB Pant Institute at Kosi. The impact of such workshop is slowly becoming visible as tangible changes are being noticed. We are very hopeful of achieving the desired results in near future. Dirghayu Himalayan Organics team on ground helps the farmers with the necessary know-how and documentation for organic certification. It also helps them in marketing their products through its offices in Uttarakhand, in Ranikhet, and in NCR in Noida. Marketing strategies are continuously being developed using all kinds of marketing tools to promote these products from the Devbhumi. This initiative by ISKCON, we are highly grateful to Mr. Jasneet, who we met, and his father is a very motivating Keshav Prabhuji, and that all the ISKCON hierarchy, that we got this opportunity to get into, that in association with ISKCON to provide them the quality organic products. This initiative by ISKCON and Hare to procure these organic and natural products from Uttarakhand is a huge step in the direction of helping the farmers from that area. Because that once you grow the products, but if it does not have the outlet, it does not have the right buyers, or that, so then the initiative remains only half achieved. Spare a moment and try and imagine what it actually means to the landless or marginal farmers tucked away in some remote corner of Uttarakhand. Believe me, brothers and sisters, it means the world to them. It means that Lord Krishna has actually answered their silent prayers. It means their children would be able to stay with them. Otherwise, there is a huge migration from the Uttarakhand to the cities. If they get this livelihood, if we can do this organic farming in all the villages in a big way, then their children will stay there, they will not migrate. It means their children will stay with them, it means joy and happiness for them and their families. It will help them realize their dreams, improve the rural economy, and most importantly, stop migration from their villages to cities. In return, all these farmers promise us unadulterated, healthy, and nutritious 100% organic agro products from their farms to our kitchen. So we are highly thankful to Hare to giving us the opportunity to associate with them, and we assure them they will never compromise on the quality, and we will never allow their name to falter due to us. And it will be a great initiative of helping the rural economy of India. And we hope and we promise you that we will not leave any stone unturned. With this, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, स्पेशली ISKCON के इतने luminaries यहाँ पर हैं और
हरिबोल का जो इनिशिएटिव है इसके, इन सबको मैं अपना दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Thank you, Guruji. Thank you for being here and thank you for being our collaborative partner on the ground. अब मैं हमारे महामहिम हिज एक्सीलेंसी गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो few words of inspiration and his blessing. पूज्य स्वामी गोपाल कृष्ण, उनके नाम में ही कृष्णा है, गोपाल है, तो महाराज तो ही है, तो गोपाल भी है, कृष्ण भी है, और हरे कृष्णा के यहाँ के ठीक है। तो हाँ, जो चीफ होता है उसको दासी कहते हैं, भक्तों के। ये जो भक्ति संप्रदाय है जिसको कहना कर्म ज्ञान भक्ति, देयर आर थ्री डिस्टिंक्ट थिंग है। तो ये जो भक्ति है, डिवोशन है, तो उसमें जो चीफ होता है वो दास होता है, क्योंकि जो दास हो गया भगवान का वही असली चीफ होता है। तो इसलिए ऐसे हमारे सभी संतगण, भाई आशीष चौहान जी, हमारे महेश्वरी जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी मित्रगण, particularly friends from Israel. You may not be able to understand my Hindi, but whenever you come across, we speak only in English with you. But here I prefer, because I speak Hare Krishna, as Hare Krishna sounds so well that it touches your heart also. So also sometimes my Hindi touches the heart of my audience. So you don't mind if I speak in Hindi. that is from उसके यहाँ के तीसरे। मैं सबसे पहले तो ISKCON को बहुत ही बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वैसे तो ISKCON जो है, ISKCON has become the source of inspiration, not for only India, but for whole of the world. Maybe who knows, for other world also. और अब ISKCON की ओर से हरि बोल, हरि बोलते जाओगे, फूट को तो बोल ही जाओगे, because Hari Bol itself is a food. If you go speaking Hari Bol, Hare Krishna, Hare Rama, you forget everything. ऐसी चीज है कि जो अब धीरे धीरे स्लोली पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि क्या है ये, कि ये सब गड़बड़ दुनिया में चल रहा है, तो कहाँ पीस है, कहाँ शांति है। तो जो पीस है, शांति है, वो कहीं न कहीं जहाँ स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, ये पीस कहाँ है, वेयर इट इज, स्पिरिचुअलिटी, वेयर देयर इज प्योरिटी, प्योरिटी इज आल्सो नीडेड। इन अपर रिलीजन ऑल द सेंट्स हैव सेड अबाउट प्योरिटी, शुद्धता होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए आदमी के जीवन के अंदर। अब प्योरिटी ये जो क्या खाद कहलाते हैं, यूरिया फर्टिलाइजर कहते हैं, अब आप फर्टिलाइजर डालेंगे, इफ यू यूज केमिकल्स, रासायनिक फर्टिलाइजर मीन्स द आर्टिफिशियल,
तो प्योरिटी कहाँ से रहेगी? देयर विल बी नो प्योरिटी एट ऑल। हमारे यहाँ कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। As the food you take, so will be your thinking, so will be your mind, so will be your heart. If you take impure or the fertilizers or the chemicals or the artificial one, so naturally, slowly and slowly, you will also become artificial, unnatural and chemical and fertilizer and ultimately destroyed. खत्म। तो इसलिए क्या अन्न कैसा खाना? तो अन्न शुद्ध खाना। अब बताइए गौरांग महाप्रभु मुझे अपने वाले गए, अब यहाँ गाय पाल रखी है, गाय भी कैसे? शुद्ध हिंदुस्तानी, शुद्ध देसी। काशी सर मैसूरी भी अच्छा लगता होगा कभी, वैसे तो ये बड़े बड़े महलों में रहते हैं, लेकिन शुद्ध खाना, प्योर फूड, प्योर मिल्क, एवरीथिंग प्योर। अब ये इसके लिए अगर मन को शुद्ध करना है, मन को साफ रखना है, तो शुद्ध खाना ये बड़ा आवश्यक है। और शुद्ध खाना ये जितना जितना आप प्रकृति के निकट जाओगे, कहने को तो लंका में भी बहुत सी दवाइयां थी, so many medicines are here in Maharashtra, in every all वाले। तो ये क्या है कि हर एक जगह की अपनी विशेषता होती है, अपनी सब स्पेशलिटी। You know, Israel has got its own speciality. Germany has got its own speciality. Russia, every country in every place has got its own speciality. तो ये जो उत्तराखंड है, it's not different from India or the one, but still every land has got its own speciality. तो उत्तराखंड के भी कुछ स्पेशलिटी तो है ही है, इसीलिए तो गंगा वहीं से आती है, यमुना वहीं से आती है। यानी my friend Mr. Hengmare has done GI tagging of Gomukh water, and once that is have got the GI tagging जब गोमुख हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोग तो मालामाल हो जाएंगे, तो उसकी तो दाम ही इतने बढ़ जाएंगे कि हरे कृष्णा बोल करके ओ गोमुख का पानी, गोमुख का पानी, गोमुख वाटर। तो ये जो महत्ता है, ये हर एक उसकी अलग अलग होती है। तो ये जो उत्तराखंड या हिमालय है, इनकी अपनी विशेषता है। और इसीलिए हमने ये कोशिश की है, भारत सरकार ने भी, कि पूरा नॉर्थ ईस्ट से लेकर के, आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में अब झगड़े नहीं होते, अब वहां लोग मारे नहीं जाते। देयर इज क्वाइट पीस इन नॉर्थ ईस्ट। व्हाई इज इट सो? आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से मंत्रालय बना, अलग से बजट दिया, और अलग से बजट देकर कहा कि अगर ये खर्च उस साल नहीं होगा, ये नेक्स्ट नहीं होगा, दैट मनी विल बी यूज्ड नेक्स्ट ईयर आल्सो। और जब कहीं मनी देंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा, खर्च नहीं कर पाओगे, स्पेशल प्रोविजन। मोदी आए तो उन्होंने वही कर दिया वहां। अब देखिए, कहीं आपको लगता है कि वहां रोज गोली चल रही है नॉर्थ ईस्ट में? कहीं असम में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, सब है, क्योंकि उनको पता था कि भाई ये तो देवभूमि है, ये हमने इनका मार्गदर्शन सही नहीं किया, इनको खाना पीना रहना संस्कार, अब संस्कार वो दिए नहीं, वो देना शुरू कर दिया, बात शांति है। अब हमारा उत्तराखंड की बात, अब उत्तराखंड अभी somebody told कि भी कितना माइग्रेशन हो रहा है। अब आपको पता है, हमारे यहाँ लोग बसे आखिरी गांव तक वो माइग्रेशन करके नीचे आ रहे थे, बिकॉज देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट। दे कम टू बॉम्बे, दे कम टू दिल्ली, दे गो टू आर्मी। और कंट्रारी टू इट, इसके विपरीत, चाइना हैज एस्टैब्लिश्ड 600 विलेजेस ऑन बैरन लैंड थ्रू आउट आवर बॉर्डर।
600 गांव हमारे बॉर्डर के पास, बिल्कुल बॉर्डर बैलेंस है ऑल थ्रू फ्रॉम अरुणाचल टू कश्मीर, लद्दाख लेह लद्दाख सब बैलेंस गाँव में गाँव बसा दी। तो अब हमारे गाँव को उत्तराखंड में बसना चाहिए कि नहीं बसना चाहिए? रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? किसके लिए रहना चाहिए? देश की रक्षा के लिए। तो आप हमारा काम देश की रक्षा करना है कि नहीं है? तो उत्तराखंड का बना भोजन, अनाज, पानी, घी, शहद खाओगे कि नहीं? बिजली कह रही मैं भी खाऊंगा। तो ये जो प्रकल्प है, प्रोजेक्ट है, ISKCON के साथ कि हमारे कुछ मित्रों ने देखा, उस पर विचार किया, कैसे विचार आया, तो उन्होंने कहा कि नहीं काम करेंगे। अब मेरे यहाँ when he was not hearing that listening Mr. Gopal Pokreti, he was a builder doing his work in Noida। लोग नोएडा आना चाहते हैं, पर उसके दिमाग में आया अरे नहीं मुझे तो वहां जाना है, यदि मेरी मातृभूमि बता रही इतनी पवित्र है। अब देखिए उसका सेव कितना बढ़िया होगा, मैंगो सॉरी दिस एप्पल। तो अब उन लोगों को वे जैसा व्यासीश बोल रहे थे कि सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर, तो ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम उनके जो प्योर प्रोडक्ट्स हैं, जो शुद्ध प्रोडक्ट है, मैं कभी कभी लोगों से पूछता हूं अरे भी तुम बोलते हो ऑर्गेनिक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक? ये बड़ा कठिन होता है बताना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनऑर्गेनिक? आपको मिशन है ओनली दी दोज हैव पॉइंट दोज वर्ड्स से दे दो, हम आपको क्या जानेंगे? तो मैं कहता यार मैं मैकेनिक भी नहीं हूँ, भाषाविद भी नहीं हूँ, आई एम नॉट ए वेरी लर्नेड पर्सन ऑल्सो। ऑर्गेनिक मीन्स सिंपली डोंट टेक इट्स रियल मीनिंग और गो इन डिटेल्स। ऑर्गेनिक मीन्स आप वो भोजन, आप वो प्रकृति की वो चीजें, यू टेक दोज फ्रूट्स, यू टेक दोज वेजिटेबल्स विच स्ट्रेंथन योर ऑर्गन्स, जो आपके ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करे, आपके मांसपेशियों को, शरीर को स्ट्रेंथन करे, दैट इज ऑर्गेनिक। अब ये ऑर्गेनिक महेश्वरी जी आपको थोड़ी मिल जाएगा 5,000 तो ये ऑर्गेनिक। अब इसको हम मुंबई में रहते हुए, दिल्ली में रहते हुए, पुणे में रहते हुए, अगर इस ऑर्गेनिक में मुंबई का ऑर्गेनिक भी, अगल बगल का महाराष्ट्र का ऑर्गेनिक भी बहुत अच्छा है, यहाँ भी कोशिश लोग कर रहे हैं। मेरे सारे विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में बोला है कि आप नेचुरल खेती करो, और नेचुरल खेती ऑर्गेनिक से भी आगे है, तो मेरा यहाँ का विषय नहीं है, कभी अलग से लोगों को बोलूंगा, जिसमें एक गाय से 1 एकड़ बन जाते हैं। हमारे गुजरात के जो गवर्नर है उन्होंने प्रयोग करके दिखाया, एक गाय से 1 एकड़ की पूरी सब खेती हो जाते हैं। गुजरात के हमारे आचार्य जी है, आप लोग भी कभी तो हम किस प्रकार से इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? तो इसलिए कि आप सब लोग उत्तराखंड तो नहीं जा सकते हो, हिमाचल तो नहीं जा सकते, तो समझ भी नहीं है, तो दी उत्तराखंड हैज कम टू मुंबई। तो इसीलिए हम कोशिश करें कि हम अधिक से अधिक उत्तराखंड के जो इतनी प्योर चीजें आपके सामने लाई जा रही हैं, अभी मांस उसमें नहीं ले जा रहे, अभी स्मॉल हमारा एफर्ट है, हमारे टीसी उप्रेती ने, देखो बाजार में बहुत ऊंचे पद पर है, लेकिन उनका ध्यान गया, ये दोनों उप्रेती ऐसे जैसे
ये ध्यान में आ गया है? तो वहां चला गया, मजा आता साथ डूइंग देयर वर्क, और बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनको मार्केट चाहिए। तो उस मार्केट के लिए, क्योंकि वो उनका एक ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मजदूर होता है, ऐसे ही वो अनऑर्गेनाइज है। हाउ टू ऑर्गेनाइज देम, और फिर कैसे उनसे शुद्ध चीज लाना, और शुद्ध चीज ला करके और उनको उसका बेनिफिट देना। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। और जब हरे कृष्णा इस्कॉन इस अच्छे काम में लग गया, कहाँ प्रभुपाद ने अपने पाद कहाँ रखे, पाँव कहाँ रखे, और प्रभुपाद के पाँव दुनिया में छा गए। तो मुझे लगता है कि प्रभुपाद का पाद हमारे पर पड़ गया, आशीर्वाद पड़ गया, स्वामी जी का पाद आशीर्वाद हमको मिल गया। तो मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड की जो हमारी कृषि है और हमारा जो उत्पादन है वो निश्चित रूप से सफल होगा। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्रेम से, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उत्तराखंड दे आर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी। मुझे महाराष्ट्र के एक घर में गया, बड़ा घर है, इस्कॉन के बड़े प्रेमी हैं, भक्त हैं, को प्रेमी भी नहीं। बोले साहब मेरे घर में तो पूरे 50 साल से पहाड़ का ही खाना बनाने वाला है, ये फलाना काम करने वाला। मैंने क्या बात है, यहाँ नहीं मिलते क्या? बोले नहीं, यहाँ मिलते हैं, पर ये पहाड़ के जो इतने साल से है ना, ये बहुत ही ईमानदार है यार, घरे होने। तो फैसिलिटी अलग अलग की। अभी महेश्वरी जी है, जिस प्रदेश से, जिस यहाँ से महेश्वरी जी आते हैं, सारे ये लोग सारे दुनिया भर में छाए हुए हैं, जहाँ से महेश्वरी जी आए है ना। इनकी स्पेशलिटी क्या है, ये जहां भी जाएंगे तो अगर इनको मट्टी देते हो तो मट्टी में सोना उगा देंगे। इनका व्यापार बढ़ता ही जाता है। ऐसे ही ये भी एक स्पेशलिटी है। तो हम सब लोग यहाँ आए हैं, एंड आई विश ऑल ऑफ यू टू यूज द उत्तराखंड प्रोडक्ट्स, और उसको प्रोत्साहन दीजिए। और मेरा विश्वास है हम सब लोग उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स को प्रयोग करेंगे तो समझ लो बद्रीनाथ नहीं गए जाने के बाद भी आधा फल तो मिल ही जाएगा। तो ये बहुत अच्छा शुरुआत की है। वेरी गुड स्टार्ट, वेरी गुड बिगिनिंग। तो पुष्कर बहुत अच्छा काम शुरू किया है। और गौरांग प्रभु कहते हैं दास हैं, हम तो इनके भी दास हैं। ये अपने को दास बोलते हैं। मैंने कहा भैया मैं तो दाता हूँ, दास हूँ, दास हूँ। आप सबको मेरा निवेदन है कि हम सब लोग पवित्र उत्तराखंड की देवभूमि की जो भी सेवा कर सके, यदि आपने थोड़ा भी योगदान उसमें दिया, मैं आपका ऋणी रहूंगा। उत्तराखंड ऋणी रहेगा, भारत ऋणी रहेगा। न केवल भारत, मेरा प्रधानमंत्री जो उत्तराखंड को इतना महत्व देता है, केदारनाथ का पुनर्निर्माण कर रहा है, बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण कर रहा है आपके लिए, तो वो भी बड़ा खुश हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको उनको भी अच्छा लगेगा कि यहाँ बम्बई से नई आवाज आ रही है, तो उनकी भी आवाज है। मुझे लगता है कि उनकी आवाज में, उत्तराखंड की आवाज में, उन सब आवाज में लाके आगे को बढ़ेंगे। आप सब यहाँ पर आए, आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मनी थैंक्स। Thank you for this very, very inspirational talk and blessing. Now I will request His Grace Gaurang Prabhuji to just do the vote of thanks, and then Mahamihim ji will go for Aarti. ये गोपाल कृष्ण महाराज बता रहे हैं उत्तराखंड भी नंबर 1 टूरिस्ट स्पॉट इंडिया में हो गया है। और ब्रजविलास को भी उत्तराखंड से पढ़ाई की है। हरे हाँ, तो सर्वप्रथम आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे गवर्नर साहब,
जब से आप गवर्नर बने हैं हम लोगों ने निरंतर आपसे प्रेरणा प्राप्त की और चौपाटी में तो मैं 1993 लगभग 30 वर्ष से हूँ, राजभवन के बिल्कुल 7-8 मिनट की दूरी पे ही है, लेकिन पिछले 2-3 साल में जितना संपर्क राजभवन के साथ हुआ पहले इतने वर्षों में नहीं हुआ। और आपके मार्गदर्शन से और प्रेरणा से अब इस्कॉन और इस्कॉन के भक्तगण एक अलग दिशा में हम लोग गांव-गांव में प्रचार करने का विचार किए हैं और आशा है कि भारत के जो 748 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें अभी 206 डिस्ट्रिक्ट में इस्कॉन विद्यमान है और आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से हम अगले 5 वर्षों में 748 डिस्ट्रिक्ट में प्रचार में शामिल होने का विचार करते हैं। और विशेष रूप से राकेश जी नथानी जिनको आपने हम लोगों को गाइड करने के लिए काफ़ी बार एनकरेज किया, धन्यवाद आपको। के महेश्वरी जी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, इस्कॉन के कई भक्त लोग इतना समझ नहीं रहेंगे कि अल्ट्राटेक के हेड रहे और जो इस्कॉन जुहू का भक्ति वेदांता स्कूल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो उस समय बाहर जो अल्ट्राटेक का रेट 270 रुपये 280 रुपये बैग का चल रहा था, उस समय अल्ट्राटेक ने इस्कॉन को 190 रुपये में पर बैग डिस्काउंट दिया था। तो शायद आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन उसके बाद 2009 में जब आपका भक्ति वेदांत मिशन स्कूल आरंभ हुआ था, गोवर्धन इको विलेज प्रोजेक्ट चालू हुआ, तब इस्कॉन जुहू के भक्तों ने वो कांटेक्ट हमको दिया और वही डीलर आपके कंटिन्यू रहे। तो गोवर्धन इको विलेज में भी जितना कंस्ट्रक्शन पिछले 10 वर्ष में हुआ वो बाहर के हिसाब से 100 रुपये डिस्काउंट में आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष भाई चौहान जो कि हमारे प्रिय मित्र रहे हैं, IIT बॉम्बे में मैं हॉस्टल 6 में था, वो 4 साल मेरे सीनियर रहे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO हैं और हमेशा सनातन धर्म के अलग अलग विचारों के सांस्कृतिक परिवर्तन के बहुत ही प्रेमी रहे हैं। उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि इस्कॉन का हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इस्कॉन और इस्कॉन के भगवद गीता का पूरे विश्व भर में पिछले 50 वर्षों में इस्कॉन ने उनके नेतृत्व में 50 करोड़ के ऊपर भगवद गीता वितरित कर दी है। और दिल्ली में लगभग 17 के ऊपर मंदिर उनके नेतृत्व में हुआ और 2-3 वर्ष पूर्व उन्होंने द बिग भगवद गीता जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से विमोचन किया और यहाँ पर उनके उपस्थिति से इस हरिबोल के लॉन्च में हम लोग सभी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। महाराज का हम आभार व्यक्त करते हैं। ब्रजहरि प्रभु उनके विशेष योगदान से यहाँ पर बहुत ही शीघ्र अभी हरिबोल का यहाँ पर स्टॉल खुलेगा जहाँ पर लोग आकर ये हरिबोल प्रोडक्ट्स को उपलब्धि कर सकते हैं, जो यहाँ पर हमने देखा। ब्रजविलास प्रभु इस्कॉन मायापुर से आए हुए हैं और उन्होंने गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर हरिबोल का बड़ा स्टॉल TOVP के सपोर्ट में वहां पर स्टार्ट कर दिया और मायापुर के TOVP वेबसाइट पर आप इसको देख सकते हो और बड़े ही रोमांचक नेतृत्व के साथ TOVP का उद्घाटन अगले 2 वर्ष के अंदर होने वाला है, आशा हम करते हैं। और उत्तराखंड से आए हुए कृषि के क्षेत्र में जो दिग्गज यहाँ पर उपस्थित रहे, आप लोगों का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग आकर अपना केस स्टडी हम लोग को प्रस्तुत किए और प्रेरणा दिए। और पालियाड से आए हुए जो गोपाल हैं, जो वास्तव में ग्राउंड पर जो गायों की सेवा कर रहे हैं, और मैं स्वयं जाके देखा कि पूरे पालियाड डिस्ट्रिक्ट में लगभग 5000 परिवार हैं जिनको एक आध्यात्मिक गुरु ने प्रेरणा दी कि आप लोगों के जीवन का मिशन है कि गौ माता की सेवा करें, रक्षण करें, और ये लोग सब मिलकर उसको कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Gratitude to Sammy, Judah and Sammy's wife who has come all the way.
and thanks to their support, we have been given a lot of guidance on agriculture and irrigation, and Sammy organized an entire tour for us at Israel for a whole week so that we can understand better and take care of our agriculture and cows in a better way. Thank you very much for your support and help. अंत में मैं यहाँ कई बैठे हुए इस्कॉन भक्तों के मन में अगर कोई शंका होगी कि ये चल क्या रहा है, तो इस शंका का निवारण पूरे आत्मविश्वास के साथ करना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए। 2019 में इस्कॉन जीबीसी ने एक रेजोल्यूशन पास किया जो कि 99.9% ऑफ इस्कॉन डिवोटीज को पता नहीं। मुझे पता है कि आपको पता नहीं, क्योंकि मुझे ही नहीं पता था। तो इसलिए हमारे ज्ञान के लिए, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा जो भी कार्य ज्ञान के साथ किया जाए उसमें श्रद्धा बनती है, और श्रद्धा के साथ किया हुआ कार्य का फल निकलता है। तो ध्यान से सुनिए, खासकर इस्कॉन के भक्त लोग। Resolution on Ahimsa milk of ISKCON GBC, Ministry of Cow Protection and Agriculture, milk from protected cows. GBC Resolution 2019 under the category of guideline, proposed by Hare Chaitanya Das and Devamrit Swami Maharaj. Whereas the current commercial dairy systems of the world, in which the older cows, practically all bulls, young and old, and most female calves are slaughtered, is thoroughly condemned and abhorrent. Whereas Srila Prabhupada wrote in this regard in Srimad Bhagavatam 1st Canto 17 chapter 3rd verse purport, Prabhupada says, these greatly sinful acts are responsible for all the troubles in present society. आपको पता नहीं होगा, लेकिन ग्लोबल बीफ प्रोडक्शन विश्व में गोमांस का जो है $320 बिलियन का इकोनॉमी है। भारत का $50 बिलियन का इकोनॉमी है। 3 करोड़ गायें और बैल भारत में हर साल कसाई खाने में मारे जाते हैं, और $3.2 बिलियन का एक्सपोर्ट गाय का और बैल के मांस का भारत से हो रहा है। India is the largest beef exporter in the whole world. Whereas ISKCON is established for more than 50 years and has matured to a stage where it is possible to establish alternative supplies of ahimsa milk or dairy from farms where all cows and bulls are protected for life. Whereas ISKCON's 6th purpose is to bring the members closer together for the purpose of teaching a simpler and more natural way of life. Whereas Srila Prabhupada desired that urban ISKCON centers should be connected to rural ISKCON farming communities, where devotees would produce food and milk to supply the urban centers. Whereas Srila Prabhupada stated that we should keep the cows very happy and without fear, and they will produce double quantity of milk. Whereas several ISKCON projects have demonstrated the feasibility of supplying ahimsa milk. Whereas ISKCON's Ministry for Agriculture and Cow Protection is prepared to support the development of ahimsa dairy. Whereas in ISKCON, many installed deities do not get milk from slaughter-free cows. Whereas continuing ISKCON's indirect support of the cow slaughter industry by consuming dairy from this industry, if based solely on financial reasons, calls into question the sincerity of ISKCON's commitment to cow protection. Resolved, this is the resolution, by Janmashtami 2022, by Janmashtami 2022. This is the resolution of March 2019. By Janmashtami 2022, all ISKCON centers, by Janmashtami 2022, all ISKCON centers should develop a plan whereby all milk and milk products, butter, ghee, yogurt, etc., offered to the deities are procured from protected cows
The centers may approach the International Ministry of Cow Protection for assistance. Resolution ends. तो ये जो है ISKCON GBC का रेजोल्यूशन है और हम लोग इस दिशा में विचार करते हुए कई हमारे जो कांग्रेगेशन के भक्त जैसे कुशल देसाई साहब और उनका फैमिली यजनीत और कई लोग इसमें जुड़े हुए हैं, हम इनके आभारी हैं। आज पूरे विश्व का ग्लोबल फूड प्रोडक्शन 4 बिलियन टन का है, 1.3 बिलियन टन वेस्ट में जा रहा है। भारत का 600 मिलियन टन प्रोडक्शन है, ऑलमोस्ट उसमें 90 मिलियन टन वेस्ट में जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये भोजन से रिलेटेड एक क्रांति यहाँ मचे। यहाँ पे आए हुए सभी सभासदों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए। और ये एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोग इतने अभी एक्सपर्ट नहीं हुए हैं। भोजन, खाद्य पदार्थ, दूध इत्यादि अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। हम लोग तो अभी गीता भागवत में उतरे हुए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम सभी को अपने जीने के लिए इन सभी आवश्यकताओं की आवश्यकता है और आशा है कि हम इस कार्य को आपके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ाएंगे। अब मैं यजनीत जी से निवेदन करता हूं कि सभी लोगों को गिफ्ट्स प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Maharaj, memento for His Excellency. And can we please have mementos? Atul ji, please, can you please bring some mementos? ये ट्रे है, हरि बोल हरि बोल। ये थोड़ी सी भेंट है ऑर्गेनिक्स की और अहिंसा की। अतुल जी जो है हम मेरे को पार्टनर, को ब्रदर इन उत्तराखंड, प्लीज आशीष चौहान जी को। नेक्स्ट कैन यू प्लीज हैव द नेक्स्ट अतुल, कैन यू प्लीज गिव इट टू के महेश्वरी जी। ये थोड़ी मायापुर की छोटी सी भेंट आशीष जी। थैंक यू। जैसे राजपाल जी ने कहा कि महेश्वरी जी को खुश करना बहुत जरूरी है, इनकी अगर ब्लेसिंग लग गई तो जो मिट्टी है उत्तराखंड की सोना बन जाएगी और उत्तराखंड के सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो इसलिए इनकी ब्लेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे मायापुर का Now I will request Maharaj to take Mahabhen ji for Aarti and national anthem. Sorry, we please have the national anthem. Thank you. Thank you, Mahabhen. Please, for Aarti. अभी आरती में जाना है। Dinner is in the hall. Please collect your dinner coupons. तो मंदिर में का इवेंट पिकनिक ये लो वाइड एंगल वाला लो। हाँ वो दे दो मुझे। हाँ वाइड एंगल वाला वहाँ काम आएगा। यूज़ करो जितना फ्लैश यूज़ करना है। आरती के लिए
आप साथ रहो। पता है ना इधर प्लस कैसे यूज करो, चालू करो ना इसको। हाँ बोलो, हाँ जाओ जाओ जाओ, हाँ थैंक यू, जाओ जल्दी जाओ भागो।